हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। आई होप जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू हिडन जेम्स और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने वो वीडियो कवर कर लिया होगा। मैंने बहुत एफर्ट से ये MCQs आपके लिए ड्राफ्ट किए हैं, सो आई एम 100% श्योर दीज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। ETC से मैंने आपको कहा था, याद रख सकते हो, दिस इज economic infrastructure, right? Then it attracts the attention of the world with regard to information technology. बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में आपका ये गिवन है कि कुछ स्टेट्स या कुछ सिटीज में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे यहाँ पे हम कर्नाटका कहेंगे, बेंगलुरु बीइंग द कैपिटल which is considered to be the technology hub or the IT hub, right? States such as Punjab, Haryana, Himachal have better infrastructure facilities in terms of agriculture and horticulture. एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है, समथिंग सिमिलर टू दिस, गॉड्स ओन कंट्री, जहाँ पे लिटरेसी, हेल्थ, टूरिज्म, सैनिटेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, केरला, राइट? सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें से वैक्सीनेशन ऑफ पीपल, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो मैंने आपको ये हिडन जेम्स में भी बताया था, इसमें आ जाएगा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो द आंसर विल बी BCE, BCE. Okay, then in India more than half of the GBD is accounted for by communicable diseases. This is also clearly given in your book. I would like to show you. जैसे GBD मैंने आपको कहा था is an important term which is used by experts to gauge the number of people dying prematurely or the number of years spent by them in a state of disability. India has 17% of the world's population, but it bears a frightening burden of 20% of the global burden of diseases. इसी point के नीचे आप देखेंगे given है आपकी book में. So here in India, more than half of the GBD is accounted for by communicable diseases such as diarrhea, malaria, tuberculosis, right? So communicable diseases is the right answer for this. Okay, moving on. Which of the examples below are related to community and non-profit organizations in healthcare? This question has actually come in your previous year CUET exam. मैंने इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर का पेपर आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. दैट इज एन एक्सट्रीमली हेल्पफुल वीडियो. प्लीज मेक श्योर टू कवर इट. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो आपकी बुक पे एक बॉक्स गिवन है NCERT में जहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी और NGOs की बात की हुई है इन हेल्थ केयर. तो उसमें हम देखते हैं अकॉर्ड इज एन NGO, सेवा ऑल्सो, शहीद हॉस्पिटल एंड क्षतकारी संगठन, ये सभी इस टॉपिक में आते हैं. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. So the answer is A, B, D, E. A, B, D, E. Right? चलिए. Dash infrastructure is important for the development of a nation. दोनों ही important है, economic भी और social भी. Right? So both A and B. Next. Dash include hospitals with better facilities of healthcare like X-ray, surgeries, ECG. आपको पता है we have 3-tier system in the health infrastructure. उसमें जो सेकेंडरी हेल्थ केयर है, जो थोड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इन बिग टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे कुछ एडवांस्ड मेडिकल टेस्ट्स होते हैं. सो दिस इज सेकेंडरी हेल्थ केयर. दीज आर नॉट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, बट दीज आर रीजनेबली बिग इन साइज एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ secondary healthcare. Then dash healthcare includes identification, prevention and control of prevailing health problems. This is the key sentence for primary health care, right? ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. Then GBD is, first point, an indicator used by experts to measure the number of people dying prematurely due to a particular disease. This also includes the number of years spent by them in a state of disability. India bears a frightening burden of 20% of the total global burden of diseases. सभी पॉइंट्स यहाँ पर सही है related to GBD. So the answer is all of the above.
Dash with the healing power of nature as it assumes that all healing powers are within our body. इसमें से कौन सा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये बिलीव करता है दैट इन आवर बॉडी इटसेल्फ वी हैव द हीलिंग प्रॉपर्टीज, अपने ही अंदर हमें अब खुद को ठीक करने की पावर होती है. सो दिस इज नेचुरोपैथी. ओके, मूविंग ऑन. The next important question is dash refers to proneness to fall ill. Very, very important word, morbidity. मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. The development of infrastructure and dash go hand in hand. So this is economic development. Infrastructure promotes economic development. How? ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था in the last video. There is a dash healthcare system in India. Three tier, right? 3 levels. Primary healthcare, secondary healthcare, or tertiary healthcare. Then we have All India Institute of Hygiene and Public Health is situated in Kolkata, and this is a part of tertiary healthcare. ये आपकी बुक में गिवन है, आप देख कर जाएंगे. Then यहाँ पे कह रहे हैं choose the correctly matched pair. Options से देखते हैं. A3 health और government, as such कोई relation नहीं है. B with 4 obliged to regulate health related issues, women in India. No, they are not responsible to regulate health related issues in the country. You know, this is the short form of National Institute of Mental Health and Neuroscience, which is located in Bangalore, and it is an example of tertiary healthcare. So C is matched with 2. Yes, this is absolutely correct. Okay, moving on. Which program was launched in the year 2003 with the objective of correcting regional imbalances in provision of healthcare? As such, ये आपकी book में mention नहीं है, but like a general knowledge question, I've added this. So the answer is Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. This was launched in the year 2003. Which of the following is not an Indian system of medicine? You know, Ayush is the Indian system of medicine. Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Naturopathy और Homeopathy. एलोपैथी इसका पार्ट नहीं होता है. ओके देन, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको मैच करना है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर यूजुअली मैन्ड बाय अ सिंगल डॉक्टर, अ नर्स एंड अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ मेडिसिन. सेकेंडरी हेल्थ सेंटर बेटर फैसिलिटी फॉर सर्जरी, एक्सरे, ईसीजी एटसेट्रा. टर्शरी हेल्थ सेंटर ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं विद एडवांस्ड इक्विपमेंट्स डीलिंग विद कॉम्प्लिकेटेड health diseases or health problems. And then Ayush is the Indian system of medicine. So A is matched with 2, B is matched with 3, C is matched with 1, and D is matched with 4. So the answer is D. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now this is a case study. आपको पता है आपको एक केस स्टडी गिवन होगी एंड देयर विल बी 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केस, बट केस स्टडी को वो बार बार लिखेंगे हर क्वेश्चन में. लाइक इफ देयर आर 5 क्वेश्चंस, इन ऑल दोज 5 क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू रिपीट द केस स्टडी, विच मीन्स कि जरूरी नहीं है कि आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर केस. यू कैन लीव एनी इफ यू विश टू, राइट. तो एक केस स्टडी होगी, they are going to write it again and again with every question, right? Okay, देखते हैं ये case study क्या है. This actually came in your previous year exam. PPPs will help in bridging treatment gap, enhance care delivery in India. Dr. Shravan Subramaniam, 5th April 2022. The government's focus on digitization of the past few years has enabled enhanced delivery of healthcare in India, increasing capacity and efficiency in the sector. There has been an 85% surge in teleconsultation, and digital platforms have eased accessibility to crucial healthcare solutions supported by the National Digital Health Mission. This has evolved the way we look at healthcare challenges and has presented India with an opportunity to address issues at the grassroots level. The production linked incentive, that is PLI scheme, and the draft paper on medical devices manufacturing policy 2022
will further promote domestic manufacturing of medical devices that will help deepen the access to quality and affordable healthcare solutions. यहाँ पे जो starting में PPP है, that means private public partnership. Okay. The government has extended support for local manufacturing of medical equipment with an aim to increase healthcare expenditure to 2.5% of GDP by 2025. Then, the Atmanirbhar Bharat initiative provides further impetus to the industry to develop and enhance healthcare infrastructure with continued technological upgradation. ओके, वैसे तो हमें क्वेश्चन पहले पढ़ लेना चाहिए, उससे हमें ज्यादा अच्छा आइडिया मिलता है, बट आई एम स्टिल जस्ट रीडिंग इट वंस. PPPs, public private partnerships, will help increase access to healthcare and improve patient outcomes. PPPs will bring together the expertise and finances of the private sector with the access and subsidies of the public sector. It can bring in resources the government needs for its healthcare goals as well as create a sustainable long-term model. The need for PPPs is further underlined considering the layout of medical infrastructure in India. According to a report by Niti Aayog, 60% of medical infrastructure is densely populated across metropolitan cities. Addressing this, private hospital chains are increasingly expanding beyond metros to tier 2 and tier 3 cities. Private players are also seeking accreditation and developing new healthcare models at an increasing rate. PPPs will also help address the shortage of skilled workers by establishing programs to upskill the health workforce within the ability to adapt to technological advancements. So such a long case, but such simple questions they've asked. यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं? Which of the following is incorrect about public-private partnerships in health infrastructure in India? It will improve the accessibility. Yes, सबको healthcare मिल पाएगी. It will help government to achieve the long-term sustainable health goals. Correct. It will increase the number of skilled workforce in health infrastructure. It will increase the rich-poor divide. नहीं, ये तो सही नहीं है ना. अगर public sector और private sector साथ में मिलके काम करेगा health infrastructure में, तो चीजें better होंगी. But ये तो एक खराब point है, right? इससे rich-poor के बीच का divide increase नहीं होगा. So this is the incorrect statement out of the given ones. Then here, this question, we have to match here. तो मैंने कुछ points underline किए थे case study में, उससे आप ये easily answer कर सकते हैं. जैसे public private partnership, हम कह सकते हैं इससे हमें private sector के expertise मिल जाती है, उनके finances मिल जाते हैं, और public sector की subsidies. Both of these things come together. So that is PPP. Then Atmanirbhar Bharat में मैंने आपको बताया था technological upgradation. We had marked this point. PLI scheme में they were talking about domestic manufacturing of medical devices, and National Digital Health Mission will support the digitization of the Indian health infrastructure. Like हमने case study में भी पढ़ा कि there is a surge to the extent of 85% in teleconsultation. जब कोविड आया था तो हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे थ्रू अ वीडियो कॉल. सो दैट इज टेलीकंसल्टेशन, राइट? सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यहाँ पे आप मैच कर लेंगे. आई होप यू कैन गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर. देन this question is also related to the case. A few challenges in healthcare sector in India are adequate investment by both public and private sector. Now this is not a challenge, this is a good thing. Lack of proper medical facilities, yes. Lack of skilled workers in health workforce, yes. Proper awareness of health and hygiene, this is not a problem, this is not a challenge. Lack of access to healthcare facilities, yes. So B, C and E is the right answer. Okay then. Teleconsultations has shown a surge of what percentage? 85% as per the case, right? Simple question. Then this is like a repeated question. Transportation and communication are examples of economic infrastructure. Very simple and important.
Then, Indian industries and pharmaceuticals have set up state of the art super specialty hospitals. What can be the possible reason for this? This is also given in your book. The reason is to attract India's rich and medical tourists. मैंने आपको कहा था medical tourism से related भी आप box जो given है वो पढ़कर जाएंगे. Right, so यहाँ पे state of the art का मतलब क्या होता है? State of the art मतलब ultra modern, फ्यूचरिस्टिक, मतलब बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एडवांस्ड हॉस्पिटल्स जो बनाए बनाए जा रहे हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? सो आई वांट टू शो दिस इन योर बुक आल्सो. सो हियर इट इज गिवन. Since the 1990s, owing to liberalization measures, many non-resident Indians and industrial and pharmaceutical companies have set up state-of-the-art super specialty hospitals to attract India's rich and medical tourists. Right? So आप देख सकते हो एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. Okay, so this is it for this video. I hope आपको ये questions अच्छे लगे. These are extremely important, like I told in the beginning of the video as well. तो इन्हें बहुत अच्छे से आप देख कर जाएंगे और हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में.